Today we are going to start about the young double slit experiment, which is the only experiment which shows that pattern of fringes of light fringes and light fringes intensities. So this is the apparatus double slit experiment. S capital S is the main source of light, and S1 and S2 are the two slits, and which are small d distance away from each other. You can see S1 S2 is equal to M is equal to small d, and this is the screen which is capital D distance away from S1 S2 pattern, and S1M is equal to S2N, which are the perpendicular distances from the slits to screen, which is equivalent to capital D equal to capital D, and this is the very most important point, S2P similar to S1P similar to capital D, S1P S2P similar to this capital D, because we make this diagram broader to see what is happening inside the diagram. Actually these slits are very much closer to each other, like this you can see here S1 and S2, so S1P S2P are similar, little bit equal to capital D, little bit difference, we can neglect that difference. So let's start about this experiment. In this experiment a light source capital S is divided into two sources with the help of double slits. These are two slits S1 S2. By doing so we get two coherent light sources. Coherent sources, coherent light sources are those which will have same frequency, same wavelength, same phase and same amplitude. Okay, so now in this diagram you can see there are two right angle triangle S1MP and S2NP. These are two right angle triangle. We will take these two triangles individually. First we are taking S1MP, triangle S1MP. We will apply Pythagoras theorem over here. So S1P square is equal to S1M square plus PM square. S1P square S1M is these values will put from here to this equation. S1M is capital D square PM you can see PM only X minus MO is D by 2, X minus D by 2 whole square, equation number 1. Similarly we will take triangle S2P square is equal to S2N square plus PN square. S2N is capital D, so this will take capital D square, and this will be POX, and ON is D by 2, X plus D by 2, small d by 2, X plus D by 2 whole square, equation number 2. Now we will subtract equation number 1 from equation number 2, because we want to find out the path difference of the lights which is entering at point P from S2 to S1, S2 to P and S1 to P. So we are finding S2P minus S1P, path difference of these light waves. So let's start 2 minus 1. 2 minus 1 S2P square, left hand side will be subtracted from left hand side and right hand side will be subtracted from right hand side. So S2P square minus S1P square, D square cancel out, X plus D by 2 whole square is this, minus X minus D whole square is this. We will simply open whole square as you know, and we will open these whole squares, and you can see here x square plus minus, they will cancel out. D square by 4 plus minus, they will cancel out. xd plus 2xd. This is S2P square minus S1P square. Okay, then we will go here and we will apply identity. A square minus B square is equal to A plus B into A minus B. So you can apply your A minus B into A plus B. So this we will apply here, S1P minus S1P into S2P plus S1P is equal to 2xd. So we need S2P minus S1P. So this will be here, this will remain here, and this section will go in denominator to 2xd. And S2P S1P similar to D, you know how it is. So capital D 2D, 2 cancel out. You can cancel these, xd upon d. So this is the path difference of light wave which is going from S2 to P and S1 to P. This is the path difference. Okay, this is first target you achieve. Now we will see the maxima and minima, because we want to see this thing, how this will be happened when two light sources are on simultaneously, and we will have a dark fringe, means अंधेरा हमें देखने को मिलता है like this. Now we know for maximum intensity, as you know earlier we have find out about the maximum intensity, path difference is equal to delta y and lambda, and whereas
the 0 whole numbers 0 1 2 3 like this, and lambda is the wavelength of light wave. Okay, so from equation number 3, this equation we gave this equation number 3 because these are 1 and 2, this is 3. From equation number 3, delta y is equal to n lambda and delta y is equal to x d by d. So we will equate these, x d by d is equal to n lambda, so x is equal to n lambda capital D is upon small d. This is the position, x is the position where maxima is formed. X is the position from O at which maxima will be formed. So if n is equal to 0, we will put n is equal to 0 here. So x is equal to 0. This is called the central maxima or central right fringe. मतलब x जो आपका है 0, यहाँ से कहीं होगा ही नहीं, इसी पर ही होगा. x अगर 0 हो गया तो p point will be at O, overlap. तो O वो पॉइंट S1 और S2 से बाहर आ रही है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल मैक्सिमा. बिल्कुल सेंटर में है, इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा और central right fringe we can say here. If n is equal to 1, 1 by 1 we will put the value of n 0 1 2 3 like this, and we will get the position of x of right fringes. N is equal to 1, x is equal to d lambda by t. This is first maximum which will be from point O d lambda by d distance away हमें मिलेगा. ओके, similarly n is equal to, we will put n is equal to 2 here, so x is equal to 2 lambda d by d. 2 lambda d और d lambda you know एक ही चीज है. ओके, 2 d lambda by d, this is second maxima, and similarly we will put these values and we will get all the maximum position one by one. ऊपर भी मिल सकता है हमें और नीचे भी मिल सकता है. अंडरस्टूड. सो दिस वाज द सेक्शन ऑफ मैक्सिमा कि कहाँ पर मैक्सिमा लाइट की इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मिनिमम इंटेंसिटी. फॉर मिनिमम इंटेंसिटी वी नो डेल्टा वाई इज इक्वल टू n प्लस 1 by 2 lambda. So delta y from equation number 3 x d by d, and this is, we will equate these and we will get the value x is equal to n plus 1 by 2 into lambda. This capital D will go up and small d denominator. This is the section. Now we will put here x is the position where minima means dark is formed, andhera is formed. If if n is equal to 0, we will put n is equal to 0 over here, and similarly n 0 1 2 3 lambda wavelength. Okay, n is 0, so x is equal to half lambda d by d, half lambda d और d lambda by small d. This is called the first minima. ये वो फर्स्ट पोजीशन होगी जहाँ पर हमें मिनिमा मिलेगा. इतनी ही दूर O से इस तरफ और उतनी ही दूर इस तरफ. ऐसे ही मैक्सिमम में भी यहाँ ब्राइट के लिए भी उतनी ही दूर ब्राइट मिलेगा और उतनी ही दूर इधर भी ब्राइट मिलेगा. सिमिलर. ओके, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट डार्क फ्रिंज. इफ n is equal to 1, so 1 plus half 3 by 2, 1 and half 3 by 2, 3 by 2 d lambda by small d. दिस इज सेकेंड मिनिमा. इतनी दूर सेकेंड मिनिमा मिलेगा. ओके, n is equal to 2 plus half 5 by 2, ढाई हो जाएगा. ढाई मीन्स 5 by 2, 2 and half d lambda by small d. This is third minima and so on we can find out. Okay, so we can see pattern over here: bright dark, bright dark, bright dark, bright dark, bright dark, bright dark, like this. You can see like this the pattern will be formed. Suppose this is bright, then dark, then bright, then dark, then bright, then dark, then bright, then dark, like this. Okay, similarly here gap is dark and this red line is bright, suppose. So bright dark, bright dark, bright, like this pattern will be formed. Okay, you can see this thing in the curve also. This is waiting you. Okay, so this is all about the young double slit experiment, how you can find out the path difference of the light wave which is reaching at point P from two slits. Coherent source we found, because you know coherent source, same frequency, same wavelength, है ना, same phase difference and same amplitude. Now we will go with the fringe width. These fringes are forming. दो fringes के बीच में कितना gap है. Fringe width, distance between two consecutive bright or dark fringes is called fringe width. Again I am repeating the word, distance between two consecutive एक के बाद दूसरी, या तो bright या तो dark, bright or dark fringes is
इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, उसको फ्रिंज विड्थ बोला जाएगा। सो फ्रिंज विड्थ को हमने बीटा से डिनोट किया, वी हैव डिनोटेड फ्रिंज विड्थ बाय बीटा। सो बीटा इज इक्वल टू nth ब्राइट माइनस n माइनस उससे ठीक पहले वाली n माइनस 1 f ब्राइट, या फिर हम n प्लस 1 f ब्राइट माइनस n f ब्राइट भी कर सकते हैं। सो ब्राइट वाला फॉर्मूला ये है, इसमें हम इसको पुट करते हैं यहाँ पर n लैम्डा डी बाई डी, ये मैक्सिमा के लिए आप लिख सकते हैं, मैक्सिमा मीन्स ब्राइट, ब्राइट nth n, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर हमें n रखना है, n लैम्डा डी बाई डी एज इट इज माइनस n माइनस वन है, n माइनस वन, n की प्लेस पर हम n माइनस वन, वी विल पुट n माइनस वन, n माइनस वन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, इसको ओपन कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी माइनस माइनस प्लस 1 into lambda d by d. This is, so you can see n lambda d positive and lambda d negative, they will cancel out, only this lambda d by d we will have. So beta is equal to this thing only will be lambda, this will cancel out these two, d lambda by small d, this is the fringe width. Similar fringe width you can find out by finding nth dark minus n minus 1th dark और n प्लस 1th dark माइनस nth dark से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, करके देखिएगा, सिमिलर रिजल्ट यू विल फाइंड आउट, ओके। एंड यू विल सी दिस थिंग, दिस फ्रिंज पैटर्न यू कैन सी बाय द इंटेंसिटी कर्व आल्सो, दिस इज द इंटेंसिटी कर्व। अगर इसको बनाना चाहेंगे तो इंटेंसिटी कर्व ऐसा बनेगा, सेम गैप पर मैंने ये लिखा है, देखिए डी लैम्डा, मैक्सिमा की पोजीशंस लिखी हुई हैं यहाँ, मैक्सिमा हमें मिला है कहाँ कहाँ मिला है, डी लैम्डा बाई 0, फिर डी लैम्डा बाई 0 पे हमें मैक्सिमम मिला है, इंटेंसिटी लाइट की सबसे ज़्यादा है, ओके, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा है 0 पर, एक्स पोजीशन 0 यहाँ पर है, वो पोजीशन पर, ओके, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा। और उसके बाद सिमिलरली आप देख सकते हैं फर्स्ट ब्राइट डी लैम्डा बाई डी, तो सपोज दिस इज डी लैम्डा बाई डी, फिर दूसरा मिला है 2 डी लैम्डा बाई डी, तो 2 डी लैम्डा बाई डी उतनी ही दूर, फिर उससे उतनी ही दूर ऐसा मिल जाएगा 3 लैम्डा डी लैम्डा बाई डी, 4 डी लैम्डा बाई डी लाइक दिस, और ऐसा ही इधर भी मिलेगा, इस तरफ भी मिलेगा और इधर भी मिलेगा, उसको हम कर्व में दिखा रहे हैं, ओके। तो ये इंटेंसिटी फुल, सपोज इंटेंसिटी 10, तो ये 10, फिर उसके बाद डार्क आ गया, फिर डार्क के बाद फिर फुल हो गया डी लैम्डा बाई डी। अगर डार्क देखेंगे, डार्क कहाँ है, तो डार्क ये रहा फर्स्ट डार्क, कहाँ है फर्स्ट डार्क, हाफ डी लैम्डा बाई डी, 0 से ये है फुल डी लैम्डा बाई डी यहाँ तक ये, तो इसके आधे में हाफ डी लैम्डा बाई डी पड़ेगा, हाफ डी लैम्डा बाई डी पे क्या है, हाफ डी लैम्डा बाई डी, वहाँ क्या है मिनिमम, मतलब डार्क इंटेंसिटी 0 इंटेंसिटी। ऐसा ही फिर से इधर भी सेम टू सेम चलता जा रहा है, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, लाइक दिस, सेम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा, सेम एम्पलीट्यूड, क्योंकि हमने क्या लिखा कोहेरेंट सोर्स, और कोहेरेंट सोर्स विल हैव सेम एम्पलीट्यूड, सेम फेज, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेव लेंथ भी उनकी सेम रहनी चाहिए, इसीलिए हमने एक सोर्स लिया, क्योंकि दो अलग अलग सोर्स से वी कैन नॉट जनरेट 2 कोहेरेंट सोर्स, इसलिए एक ही सोर्स के आगे हमने 2 स्लिट लगा दी, जिससे कि वही वेव आगे बढ़ती जाए, और उन्हीं 2 वेव्स को जब वो स्लिट्स में से बाहर निकलेंगी तो कोहेरेंट सोर्स की तरह उन्हें यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज उन दोनों लाइट वेव्स जो S1 से जाएंगी निकल के बाहर, उनका सेम फेज होगा, सेम फ्रीक्वेंसी भी होगी, सेम वेवलेंथ भी होगा, और सेम एम्पलीट्यूड भी उनका होगा। सो दिस इज द इंटेंसिटी कर्व, यू कैन फाइंड आउट इंटेंसिटी, ये है ओ के ऊपर हमने लिखा सेंट्रल मैक्सिमा, फिर उसके बाद फर्स्ट मैक्सिमा MAX मैक्स, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, ऐसे ही इधर मिनिमा के लिए लिखा हुआ है, ये वाली पोजीशन जो आपको नज़र आ रही है, ये पोजीशन पर है फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, ऐसे इधर भी, तो एक एक तरफ मिनिमा एक तरफ मैक्सिमा दिखा दिया है, जबकि मैक्सिमा मिनिमा, ऐसे मैक्सिमा मिनिमा, okay, so this is all about the young double slit experiment, each and everything is here, we practice it, खूब प्रैक्टिस करिए इसकी।